I read all these popular books, so you won't have to. Every time a book becomes popular, two types of people appear, the ones who worship it and the ones who hate it just because it's popular. But the real question is, are these books really good or are we just collectively romanticizing them? Hello everyone, my name is Smriti aka Bibliophile Half Blood, and today we are going to talk about some of the most loved books and whether they deserve all the hype or not. By the way, before starting the video, I just want to say that this is my opinion और आप लोगों को मुझसे agree करने की जरूरत नहीं है. It's just what I think about these books. So if you don't agree with me, do let me know in the comment section below. But please don't hate on me only for my opinion. It's just my opinion and I would also love to hear yours. So I think without wasting any time, we should just start the video with the most loved books of all the time. If you love sad books, if you scroll through Instagram, I think you have seen these two books multiple times by the same author. The books that I'm talking about are none other than The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns by Khalid Hosseini. I think The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns are those two books that people say that they love, but they don't always talk about why. So today I'm going to tell you guys exactly why I love this book. Starting with The Kite Runner, first of all, I would like to give you guys a little plot summary of the books. अगर आपको इस बुक के टाइटल से ये लग रहा है ना कि इट्स जस्ट अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज फ्लाइंग काइट्स, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो. काइट्स तो इसका मतलब एक 1% पार्ट भी नहीं है. हाँ, मतलब प्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो काइट वाला पार्ट, बट काइट से बहुत ही ज़्यादा बढ़कर है. इट्स अबाउट बिट्रेयल, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट गिल्ट, और वो एक ऐसा गिल्ट जो आपको रात को सोने ना दे. इफ यू हैव नेवर क्राइड व्हाइल रीडिंग अ बुक इन योर एंटायर लाइफ, देन दिस बुक इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज दैट. इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप रोए नहीं तो मैं समझूंगी कि आप एक रोबोट हो. आई लव दिस बुक बिकॉज इट शोड मी कि एक ही तरह का प्यार नहीं होता है. इट्स नॉट ऑलवेज रोमांटिक रिलेशनशिप्स दैट वी क्रेव. प्यार बहुत सारी तरह के होते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं हमें. इट्स ट्रैजिक, येस, बट इट्स ट्रैजिक बिकॉज इट फील्स रियल. बहुत ज़्यादा रियल लगेगी आपको स्टोरी. और जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, जैसे अभी तो मैं हंस हंस के बता रही हूँ पर इस बुक में ऐसा हंसने वाला कुछ है नहीं, तो जब आप ये बुक पढ़ोगे योर हार्ट विल एक 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 पेज के बाद, एक एक लाइन के बाद तुम्हें पता चलेगा इस बुक को पढ़ने के बाद कि द वुमेन इन अफगानिस्तान वो कितने सारी चीज़ों से गुजरी हैं, उन्होंने क्या क्या सहा है और अब उनके साथ क्या हो रहा है. इट्स सैड, इट्स ट्रैजिक, आई नो, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीड फॉर एवरीवन. फाइनल वर्डिक्ट, yes, of course, it's absolutely worth all the hype. Now let's jump into something controversial. Yes, I'm talking about Shatter Me series, and if you follow me on Instagram, then I think you know how much I love Aaron Warner. He is my husband, everyone, so please shut up. सब चुप रहेंगे, वो सिर्फ मेरा हस्बैंड है, ठीक है. आई लव 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 हिम. But here's the thing that not a lot of you know. It's that I absolutely despised the first book, Shatter Me. It was so bad. I hated that book. And I didn't want to continue reading the series at all. But one of my followers told me at that time that I should continue the series because it's really good. And Aaron Warner and that one follower of mine convinced me to continue reading the series, and I'm glad I did because oh my god, Ignite Me was so good. Shatter Me is about a girl, Juliet, who has a lethal touch and she cannot touch anyone. She cannot physically connect with people without harming them. I liked the book in the beginning, okay, but then Juliet, oh my god, she was so exhausting. I mean, her thoughts were repetitive और वो सेम ही बात बार बार बोल रही थी. मैं सबसे अलग हूँ, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं कुछ नहीं. और ये सारी चीज़ें मेरे मतलब मैं बार बार पढ़ के इसको बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा. मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी जूलियट से. शी वॉज जस्ट गेटिंग ऑन माई लास्ट नर्व और मुझे ऐसा लग रहा था प्लीज़ गॉड इसे हटाओ. मुझे कुछ अच्छा चाहिए, मुझे कुछ अच्छा पढ़ना है. एंड देन एरन केम और उसके बाद स्टोरी थोड़ी सी अच्छी हुई थी. बट बाय द टाइम वी रीच इग्नाइट मी, जूलियट्स ग्रोथ इज अनडिनाइबल. शी बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ अवेयर. हर कैरेक्टर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द होल सीरीज. बट इन माई ओपिनियन इस पूरी सीरीज को इग्नाइट मी पर ही खत्म हो जाना चाहिए था. इतना ज़्यादा आगे ड्रैग नहीं करना चाहिए था. So that's just what I think. Do let me know in the comment section what's your opinion on this whole series. Final verdict, it's slightly overhyped in the beginning, but by the end it will all make sense. और Ignite Me तक it's actually very rightly hyped, but उसके बाद I would still say it's overhyped. Next up we have We Were Liars. Yes, the same We Were Liars जिसकी आपने सीरीज देख रखी होगी शायद, but आपको ये नहीं पता होगा कि it's actually adapted from a book. A wealthy privileged family spends every summer on a private island until one summer changes everything. People told me I would actually cry after reading this book. I would bawl my eyes out. This book will
break me, but the funniest thing here is that I didn't shed a single tear. Yes, you heard it right. And if that wasn't enough, I predicted the whole twist very early on. I mean, yes, it was nice, it was okay, but it was not mind blowing for me. Maybe because I have just read too many psychological thrillers और अब मुझे कुछ चीज़ शॉक नहीं करती है. But I read this book 2 years back और उस टाइम पर भी मुझे इसने शॉक नहीं किया. So final verdict, it was actually not worth the hype for me at all. Next up, we have Yellowface. A struggling writer steals her friend's manuscript after her death. Yes, you heard it right. And if that wasn't enough, she builds her career on it. Her whole career on it. You know, she was failing in life और उसकी दोस्त जो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर होती है, उसकी डेथ हो जाती है और उसे दिखता है कि उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पड़ी हुई है, वो अपने बैग में डाल देती है. शी डिडंट प्लान ऑन यूजिंग इट. ओके, मतलब उसका ऐसा कोई प्लान नहीं होता है. एट वन पॉइंट आई वॉज scared to read it. I cannot believe I'm saying it. मुझे बुक्स पढ़ के, हॉरर बुक्स पढ़ के इतना डर नहीं लगता है. And it's not even a horror book, but after a while, at one point, I was truly scared. The book is about ambition, race, class privilege, and also a little bit about the publishing industry. Final verdict, yes, it was absolutely worth the hype for me. A lot of people didn't like it, and I can see why they didn't. But for me, it was actually worth the hype. It has got an open ending, so if you don't like open endings, please don't read it. But please do read it because I would love to discuss that ending with you all. Next up, we have Ugly Love, and trust me, it truly lives up to its name. It is ugly. It is a very ugly book. I would never recommend even my enemies to read it. It's so bad. Okay, so we have two people here जो सिर्फ physically साथ हैं, ऐसा वो बोलते हैं, but then of course the girl fell for the boy, but the boy being the boy, वो बहुत ही ज़्यादा toxic, बहुत ज़्यादा manipulative, and somehow he's still stuck in his past, जिसको वो हर डिसीजन के लिए ब्लेम करता रहता है अपने बार बार. एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दैट पास्ट, ओ माय गॉड, दैट वाज प्योर शिट. मतलब इट वाज वन ऑफ द शिटिएस्ट, सबसे बुरा पास्ट अगर आप जो इमेजिन कर रहे हो, वो उससे भी ज़्यादा बुरा पास्ट था. वो था ही क्यों, उसे पढ़कर ही मेरा इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो गया था. जब मुझे पता चला कि उसके और उसकी पास्ट लवर के बीच में क्या कनेक्शन था, तो मेरा इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो गया था. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट इट. आई स्टिल रेटेड इट अराउंड 2 स्टार. पता नहीं मैंने वो भी क्यों रेट किया था. आई गेस अगर मैं आज पढ़ूंगी तो मैं 1 स्टार भी रेट नहीं करूँगी इस बुक को. इट वॉज so बैड. ओके, so if you are looking to torture yourself, please go read this book. If you are looking to just, if you want to give something to your ex, if you want to give something to your enemies, go and give this book. I don't think I'll need to say any final verdict on this one. You all already got the point, right? So yeah, that's it for today. I think the problem is not the hype, it's our expectation. हमारी खुद की expectations ही हमें hurt करती है. So this is what I have been trying to do. I am going into books with zero to no expectations, or so far it's working well for me. For example, I finished reading this book recently and it was really good क्योंकि मुझे zero expectation थी इससे. So I would recommend you guys to go into books with zero to no expectations, and trust me, it will actually make a huge difference. I totally agree that unpopular books are the real OG. Unpopular books ही ज़्यादातर हमें सरप्राइज करती हैं, बट समटाइम्स अ बुक कैन बी पॉपुलर, इट कैन बी गुड एंड जस्ट नॉट फॉर यू. And I think that's completely okay. So tell me in the comment section, what's that one popular book that didn't live up to its hype for you? And also tell me in the comment section, what's your favorite underrated books? If you guys want me to make a part 2 of this video, do let me know that too. So yeah, that's it for today. I'll see you guys next time. Bye.